Hello students, welcome to CAT preparation by Testbook. Guys, this is a very important session wherein we will discuss the basic formulas of logarithm. We will only check out the formulas, and yes, after this session I'll upload a PDF for questions from logarithm to practice on my official Telegram channel. So usko bhi kaise join karna I'll tell you later on. Before we start guys, I'll give you a heads up कि आपको कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे इन दिस पर्टिकुलर शॉर्ट वीडियो. We are only going to discuss the important formulas that are very regularly featuring in logarithms. Let's start. Before that, do not forget to join me daily at 7 p.m. Daily 7 p.m. I conduct class for quantitative aptitude for CAT over the channel, जहाँ पे हम लोग टॉपिक वाइज प्रिपरेशन भी करते हैं, रिवीजन भी करते हैं, मॉक एनालिसिस भी करते हैं, लाइव डाउट सॉल्यूशन भी करते हैं एंड स्ट्रैटेजी डिस्कशन भी करते हैं. अगर आपको इन डिटेल पूरा का पूरा सब्जेक्ट पढ़ना है, फॉलो द चैनल कैट प्रिपरेशन बाय टेस्ट बुक. उस पे यू हैव माय सीरीज, एज द अरिथमेटिक सीरीज है. द एंटायर क्वांट हैज बीन कवर्ड. स्क्रैच बैच में यू विल फाइंड ऑल द टॉपिक्स. लॉगरिथम्स का भी डिटेल में अगर करना है, हर एक फॉर्मूला का डिटेल विथ प्रॉब्लम्स स्क्रैच बैच में आपको मिल जाएगा. स्क्रैच बैच के अंदर जाएंगे, सो इट वुड बी समथिंग लाइक दिस, बहुत स्ट्रक्चर्ड तरीके से. दिस इज स्नैपशॉट ऑफ वन ऑफ द वीडियोस. सो एग्जाम लेवल का वीडियो आपको स्क्रैच बैच में मिल जाएगा, एज द अरिथमेटिक में मिल जाएगा, एज द अलजेब्रा में भी आपको मिल जाएगा. सो फॉलो द चैनल. दिस चैनल इज गोना हेल्प यू अ लॉट इन योर प्रिपरेशन फॉर कैट 2025. लेट्स स्टार्ट गाइस. लॉग, सबसे पहले नोमेनक्लेचर. So suppose if this is written log b to the base a equals c. So this a is called base. A is called base. This b is called argument. And c is called power. C is called exponent or power. Okay. And how this is treated? इसको कैसे लिख सकते हैं? We can write this as a to the power c equals b. A to the power c equals b. This is rewritten as this. This can be rewritten like this. A raised to the power c, a raised to the power c equals b. ये आप याद रखना, ठीक है? Chalo, let's start with the basic formula. The first one says that log of 1 with any base is equal to 0. Right? Log of 1 with any base is equal to 0. We can also write b raised to the power 0. So b could be any natural number. B raised to the power 0 equals 1. Anything raised to the power 0 is 1. Remember this. Log of a to the base a would always be 1. Again, you can figure this out, right? A raised to the power 1. क्या होता है? A raised to the power 1 is a only, ना? Holds true. So log a to the base a is 1. Right? Now, log m into n to the base b. अगर product में है, log m into n to the base b is log m plus log n both to the base b. Sorted? So if there is something like this, log 6 है अगर, okay, to the base let's say 4. So we can write this as log 6 को लिख सकते हैं 2 into 3. This can be rewritten as log 2 to the base 4 plus log 3 to the base 4. This can be written if required. Moving ahead, log m upon n to the base b is log m minus log n both to the base b. Suppose you have log 15 to the base 10, right? Now this can be written as log 30 by 2 to the base 10. So this can be written as log 30 minus log 2 both to the base 10. Okay.
and then you have more applications of this. Moving ahead, guys, log m to the power n to the base b. So अगर argument के ऊपर power है ना, that power comes in front and get multiplied with the log m to the base b. So log m to the power n, so n will come in forward multiplication में. Argument का power will come in front of the equation and will multiply with the equation. जैसे if this is given log 5 square to the base 10. So जो 2 है, this can be brought forward to log 5 to the base 10, as simple as it is. Okay? But अगर base का power है log m to the base b raised to the power n, तो अगर base का power है ना, तो that also comes in front, but division में. So log m to the base b raised to the power n is 1 by n log m to the base b. Suppose we have something like this, log 50 upon 5 square. So ये जो 2 है ना, ये आगे आ जाएगा, but वो डिविजन में जाएगा, 1 by 2 बन के आएगा, right? And remaining as it is, log 50 to the base 5. Sorted? अब इन दोनों को कंबाइन करके अगर आर्ग्यूमेंट का पावर अल्फा और बेस का पावर बीटा, तो अल्फा भी आगे आएगा, बीटा भी आगे आएगा, राइट? बट अल्फा आएगा मल्टीप्लाई में, बीटा आएगा डिवाइड में. अल्फा बाय बीटा log a to the base b. Alpha by beta log a to the base b. And there are set formulas for log. आपको बार बार वही यूज करना होता है. log का क्वेश्चन इज जनरली वेरी इजी, इज कंसिडर्ड टू बी इजी इन एक्चुअल एग्जामिनेशन. बच्चों को ये अप्लाई करना नहीं आता है. So you have to solve at least 30-40 questions. I'll provide you the PDF also. I'll upload the PDF over my Telegram channel. From there you can download it and solve it. डिटेल में सीखना है. आई हैव टोल्ड यू स्क्रैच बैच में काफी सेशंस पड़े हैं लॉगरिथम्स के. चलो नेक्स्ट. ओके, ओके. सो यहाँ पे मिसिंग है एक इक्वल टू बीच में. सो दिस इज द टाइपो एरर. बीच में एक इक्वल टू है, राइट? सो देखो, दिस इज बेस चेंज. सो लॉग m टू द बेस b है, log m to the base b. This can be written as log m upon log b. This can be written as log m upon log b to any common base. Let's say a is the base. To any common base. तो आपको ये मिल गया, राइट? आपको ये मिल गया. ऑल्सो अगर आप जो डिनोमिनेटर में है उसको ऊपर लेकर जाओगे तो ये आर्ग्यूमेंट और बेस इंटरचेंज हो जाएगा. सो दिस इज न्यूमरेटर में log m to the base a मल्टीप्लाइड बाई, अगर ये ऊपर गया तो इसका आर्ग्यूमेंट बेस बन जाता है और बेस आर्ग्यूमेंट बन जाता है, log a to the base b. ओके, सो दिस इज दिस and this is this. I hope you understand. आराम से धीरे धीरे लिख के करो, you will get it. Next, b to the power log n to the base b. अब ऐसे केसेस में क्या होता है, this base and this argument they gets interchanged. So b पावर में log n to the base b. अभी n will take b's place and b can go to n's place. So what we will get? We'll get n पावर में log b to the base b, and log b to the base b we know is 1. Log b to the base b we know is 1. So this is n raised to the power 1 equals n. Keep this in mind. Sorted? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जो हमने अभी सीखा, अभी लास्ट में आपको सिखाया था log a to the base b
This can be written as log A upon log B to some common base C. Base आप कुछ भी डाल सकते हो. It should not be negative. Sorted. और ये भी आपको अभी सिखाया. Right. Log C to the base B. अगर नीचे से ऊपर जाता है तो आर्ग्यूमेंट और बेस इंटरचेंज हो जाता है. रेसिप्रोकल जाने में भी आर्ग्यूमेंट और बेस इंटरचेंज हो जाएगा. राइट. तो 1 अपॉन लॉग, जो आर्ग्यूमेंट था वो बेस बन जाएगा और जो बेस था वो आर्ग्यूमेंट बन जाएगा. सॉर्टेड. गोइंग बाय द सेम लॉजिक, दिस log A upon B is log A upon log B लिख सकते हैं. राइट. लेट्स से अ कॉमन बेस इज C एंड अगेन log A to the base C. इसको ऊपर लेकर गए, इसको ऊपर लेकर गए. सो व्हाट वी विल गेट, बेस और आर्ग्यूमेंट एक्सचेंज हो जाएगा. log C to the base B. ये सारी चीजें आप कैलकुलेशन में भी करते हो. सेम चीजें बार 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 बार. There are some important points to remember. Logarithm of 1 with any base is always 0. Okay, log of 1 with any base is equal to 0. We have taken care of this, na? B raised to the power 0, B raised to the power 0 is equal to 1, always. The base of logarithm is never taken as 0 or negative. Chalo, log B to the base C is equal to A. This is called base. B will always be greater than 0. It can never be taken as 0 and negative. Keep this in mind. बहुत important है. B is always greater than 0. It can never be 0 or negative. आपको डोमेन और रेंज डिफाइन करने में ये हेल्प करता है. Log of negative numbers are not defined. अच्छा, ये बेस की बात कर रहा है. So यहाँ C, this C is greater than 0. Base. This is base. This is argument. This is base. Okay. Log of negative integers are not defined, and also log is not defined. Log of negative integers are not defined. So log of -2 is not defined. So this has to be greater than equal to. This has to be greater than equal to 0. Bolo, yes, sir. Sorted? Now, this is the formulas, basic formulas from log. I'll upload this PDF over my official Telegram channel. आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं. ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? The questions that it comes with. Practice के लिए I have kept many questions. So you can practice these questions and get a hang on logarithms. I'll upload this PDF over my official Telegram channel. Scan करके you can join it always. You can always join it by scanning this QR code. Sorted? Chalo guys, let's meet again in next session. Do not forget to like the session. Okay.